Namaste, dear students. Welcome to the third session of Indian Polity, and we are doing our module Constitution of India. So today's topic is Preamble of India, one of the finest, fantastic, and important topic from the perspective of exam also. So we are going to cover every minor detail of it. So let's begin our work for today. As you can see on the left side of screen, there is a copy of Preamble. Preamble looks like this. So one of the most important thing is that you have to learn it word by word because this is most important, right? Let me take my pen. So very important. So what does preamble actually means? It is the introduction, soul, spirit, summary and ideals of Indian Constitution. So what does it means? Introduction, soul, spirit, summary and ideals. Originally drafted by or prepared by Jawaharlal Nehru and based on American model. It also signifies the philosophy of Indian Constitution. भारतीय संविधान का फलसफा इसी से हमें मिलता है, which is based on the objective resolution drafted by Jawaharlal Nehru and adopted by Constituent Assembly on 13 December 1946, a very crucial date for exams. So on 13 December 1946, Constituent Assembly had adopted this objective resolution passed by Jawaharlal Nehru. Now, as you can see on the left side of your screen in preamble that there are some words in bold formats, right? That is, we the people of India. This is the phrase which is in the bold format. So what does it actually means? It defines the source and the authority of Indian Constitution. So people of India are the source and the authority of Indian Constitution. Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So, sovereign, socialist, secular, democratic republic, you can memorize it by using the mnemonic called SSSTR. It states the nature of Indian political structure. Next, we have justice, that is of three types: social, economic, and political. And then liberty, that is of thought, expression, belief, faith and worship. And we have equality, that is of status and opportunity and to promote them all, right? So three types of justice we have, five types of liberty, two types of equality and fraternity, which defines the objective of Indian Constitution. One more important point is here that there is no such kind of a word called economic liberty. That was the question in UPSC 2017 pre, that which kind of liberty we do not have. So economic liberty we do not have, and out of these four words, liberty, equality and fraternity had been taken from French Revolution 1789. Preamble of India also defines or also mentions the date of its adoption, that is 26 November 1949. So on 26 November 1949, Constitution of India has been adopted. So you guys tell me which day is celebrated on 26 November every year. So tell me about that day in the comment thread, right? Now there are some particular kind of, there are some sort of doubts in our mind. The question that emerges in our mind is whether preamble is a part of Indian Constitution or not. क्या ये जो हमारा उद्देशिका और प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है या नहीं? That is also the question of our aspirant. उसके दिमाग में भी ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या हम इसे संविधान का अंग बोलें या नहीं. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारी रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की, पर्टिकुलर केसेस इसके साथ एसोसिएटेड रहे, तो हम कुछ ऐतिहासिक केसेस इसके साथ देखते हैं. और फर्स्ट केस इज बेरूबारी केस 1960. फर्स्ट, whenever you read about any case, also remember its year, because in some exams you have a question like match the columns. On one side you have case and on the other side year, and you have to match the case with the particular year. So whenever you are going to read any kind of a case, please remember or note its year also. So in Berubari case 1960, there was a ruling that preamble is not the part of Indian Constitution. इस रूलिंग में बोला गया कि जो हमारी उद्देशिका और प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, यानी उसका एक पार्ट नहीं है. इट ऑल्सो टेल्स
that preamble is the tool or key to unravel the minds of constitution makers. So जो हमारे संविधान के निर्माता हैं उनका दिमाग एक चाबी की उनका दिमाग एक ताले की तरह है, एंड preamble is the key to open the Indian constitution, right? Next case, very historic case, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973. वाई हिस्टोरिक? बिकॉज इस केस में एक कॉन्सेप्ट कॉइन किया गया, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज कॉइन्ड इन केशवानंद भारती केस 1973. इसमें ये रूलिंग आई कि प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली 1960 की रूलिंग को ओवर रूल करके प्रिएम्बल, इसमें बोला गया कि प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज ऑल्सो द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? एक और केस साथ में रहा, LIC इंडिया केस 1995, जिसमें ये बोला गया कि प्रिएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इफ समबडी गोना आस्क यू वेदर प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, आंसर इज yes, it is a part of Indian constitution and moreover it is an integral part of the Indian constitution, right? Now there are 6 features associated with this preamble of India. First is basic structure doctrine, and its ruling came in SR Bommai case 1994. Second is it did not provide any kind of a legal framework or structure of constitutional law. Third, it is neither a source of power nor limitation. नहीं तो ये किसी प्रकार के शक्ति का केंद्र है या स्रोत है, ना ही कोई ये लिमिट करता है चीज़ों को. सेकेंड, फोर्थ, इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ अ राइट और इम्पोज एनी काइंड ऑफ अ ड्यूटी. फिफ्थ, क्या ये एनफोर्सिएबल है? आंसर इज नो, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल. क्या ये जस्टिसिएबल है? आंसर इज नो. फंडामेंटल राइट्स के अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में कि क्या वो एनफोर्सिएबल है, यस, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल है. क्या वो जस्टिसिएबल है? यस, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल भी है. क्या हम इसका अमेंडमेंट कर सकते हैं? सो यस, हम इसका अमेंडमेंट कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल टू अमेंड इट बाय यूजिंग आर्टिकल 368. सो वन टाइम in its history that preamble had been amended, that is in 42nd Amendment Act 1976. उसमें 3 कीवर्ड्स जोड़े गए थे प्रिएम्बल में. पहला जोड़ा गया था सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर एंड थर्ड इंटीग्रिटी. सो ये 3 वर्ड्स जोड़े गए थे 42nd Amendment Act 1976 में. नाउ यू गाइस टेल मी दैट आर्टिकल 368 हैज बीन borrowed फ्रॉम विच नेशन? किस कंट्री से हमने इसको बोरो किया है? आप मुझे इसका आंसर कमेंट थ्रेड में दें, राइट? नेक्स्ट जो हमारा निमोनिक्स था SSSDR, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नाउ इट्स टाइम टू डिकोड इट वर्ड बाय वर्ड. फर्स्ट इज सोवरेन. सो हम कहते हैं कि भारत एक संप्रभु देश है, इंडिया इज अ सोवरेन नेशन. व्हाट इज इट्स प्रूफ? सो इसका प्रूफ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? वी द पीपल ऑफ इंडिया. सपोज कोई आपसे कहता है वाई आर यू इंडियन, आप भारतीय क्यों हैं? सो आपका आंसर क्या होगा? सो उसका जो बेसिक है, उसका जो मूलभूत जो उत्तर है वो यहाँ से मिलता है, बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया विच आर द सोर्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो इसमें 2 तरीके का कॉन्सेप्ट है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इट मीन्स दैट वी एज अ नेशन आर इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजंस internally and externally, right? Next came socialist, which aspires the state will secure the social, political and economic justice, that is also embodies in our DPSPs, right? Next came secular. Secular means state has no official religion. राज्य का कोई भी अपना आधिकारिक धर्म नहीं होगा, but people of India can profess, practice and propagate the religion of their choice. It is very different from the Western concept of secularism, right? It is also a basic feature of Indian Constitution, and that ruling was said in SR Bommai case 1994. Next came democratic. हमें गणतंत्र है because rule of people is there. Last, republic. So why we are republic? सॉरी, मैंने यहाँ गलत बोल दिया है. ये डेमोक्रेटिक मीन्स हम एक लोकतंत्र हैं, रिपब्लिक मीन्स हम एक गणतंत्र हैं. सो वाई वी आर रिपब्लिक? बिकॉज हेड ऑफ स्टेट इज नॉट अ हेरिडेटरी पोजिशन और अ मोनार्क लाइक इन UK. सो हु इज आवर हेड ऑफ स्टेट? प्रेसिडेंट इज आवर हेड ऑफ स्टेट, राइट?
In India, president is our head of state, and there is another term related to it, that is HOG, which means head of government. So PM is the head of government. So in India, the post of president is an elected post and its term is of 5 years. पढ़ेंगे हम आगे उसे भी. So ये सब आज हमने कवर अप किया है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. एक बार मैं फिर से सारी स्लाइड्स आपको दिखा देता हूँ वन बाय वन फॉर अ क्विक रिवीजन. सो हमने कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने क्वेश्चंस जो भी हमारे माइंड में थे एस्पिरेंट के उसको सॉल्व किया. उससे रिलेटेड हमने 3 केसेस देखे. उसके बाद हमने 6 फीचर्स देखा प्रीएम्बल ऑफ इंडिया का. उसके बाद हमने ये वर्ड्स देखे. नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर क्वेश्चन ऑफ द डे. आई टोल्ड यू दैट आई विल ब्रिंग 1 क्वेश्चन पर डे पर सेशन. बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये. सो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. तो धर्मनिरपेक्षता के अवधारणा पे ये सवाल है, पढ़ते हैं. फर्स्ट, सेक्युलर वाज इनिशियली मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म मीन्स mutual inclusion of state and religion in order to protect the values such as individual freedom and citizenship rights. So which of the following statements are correct? ध्यान से पढ़ें, अपना आंसर ध्यान से लॉक करें. कमेंट थ्रेड्स में बताएं कि आपका आंसर सही था या गलत था. राइट. सो लेट्स सी इट्स आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं. पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि सेक्युलर इनिशियली मेंशन नहीं था. इट वॉज एडिड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके साथ 2 वर्ड्स और जोड़े गए थे, दैट इज सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी. एंड सेकेंड क्यों गलत है? द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूजन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन. वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म का ये कहता है कि ये आपका स्टेट है और ये आपकी रिलीजन है. दिस इज नॉट इंटरलिंक्ड, दे आर अ सेपरेट एंटिटीज. मीन्स both state and religion must stay away from the internal affairs of one another. The state must not intervene into the domain of religion, and likewise religion should not dictate state policies or influence the conduct of the state. The purpose behind to make a mutual exclusion of state and religion is to safeguard the freedom of individuals as per the Western concept. In the context of Indian secularism, this is a totally different thing. तो हम पढ़ेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर है. आने वाले टाइम में, आने वाले सेशंस में हम इसको देखेंगे. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. एंड देयर आर सम गुड रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम द पीटीज फैमिली. मेक फुल यूज ऑफ इट एंड टेल अस योर comments. Your suggestions are valuable to us. So till then, keep learning, keep watching, keep sharing, keep liking and keep subscribing. Right? Till then, take care. Goodbye. Namaste. Jai Hind.